weekend going on? I was just sitting idle and I thought of shooting this video because I have been doing a lot of research with one issue which we all face. ये एक ऐसा इशू है जो अक्सर हम सब लोग अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा फेस करते हैं, विच इज़ द पावर ऑफ नाउ. हम आज के टाइम इस मोमेंट में कैसे रहें. या तो हमारा दिमाग हमेशा पास्ट में होता है, हम उसके बारे में सोच रहे होते हैं, या फिर हम हमेशा फ्यूचर के बारे में सोच रहे होते हैं कि कब कैसे क्या होगा, पास्ट में मेरे साथ वो क्यों नहीं हुआ, काश ऐसा हो गया होता. सो वी आर ऑलवेज प्लानिंग अबाउट द फ्यूचर, बट हम प्रेजेंट में नहीं रह पाते हैं. एंड दिस इज वॉट ब्रिंग्स मी टू द टॉपिक. I will discuss about a book called as Power of Now. You all have heard. It's a very famous and a very spiritual book. And this is something which talks about being in the present moment. जिसने भगवद गीता पढ़ी है या जो थोड़ा सा भी भगवद गीता के बारे में जानता है, Lord Krishna says, whatever has happened for your good. Whatever is happening is also happening for your good, and whatever will be happening will definitely happen for your good. So there is no need to worry about the past. There is no need to get those regrets in your life. वो क्यों नहीं हुआ, काश ऐसा हो जाता, काश वो मेरी बात मान लेता, काश मैं उनकी बात मान लेता, काश मैं ऐसा कर चुका होता, काश वो मेरे फेवर में आ जाता. देर इज एब्सोल्युटली नो नीड टू रिग्रेट ऑफ एनीथिंग वॉट एवर हैपेंड इन द पास्ट, बिकॉज पास्ट एग्जिस्ट करता ही नहीं. आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, वो जा चुका है. अभी भी मैं आपसे जो बात कर रही हूँ, इससे 2 मिनट पहले का जो पल है वो जा चुका है, वो मेरे कंट्रोल में नहीं है. सिमिलरली फ्यूचर भी आपके कंट्रोल में नहीं है, वो एग्जिस्ट नहीं करता. इनफैक्ट वाइल वी आर टॉकिंग वी डोंट इवन नो दैट वी माइट नॉट इवन गेट अप टुमारो. सो मेनी पीपल आर लूजिंग देयर लाइफ, सो देयर इज एब्सोल्युटली नो नीड टू इन्वेंट योर फ्यूचर. और जैसे कि लॉर्ड कृष्णा कहते हैं कि फ्यूचर का निर्माण ना करो, उसका आलिंगन करो. जैसा होगा, जो आएगा, इतनी शक्ति रखो, इतनी क्षमता रखो कि हम उसको अच्छा बना लेंगे. इतना विश्वास, इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस हमें अपने ऊपर होना चाहिए, विच इज़ वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम प्रेजेंट के मोमेंट में रहें, उसे अच्छा बनाएं ताकि हमारा फ्यूचर ऑटोमेटिकली अच्छा बन जाए. Now, coming back on the topic, we will be talking about this famous book called as Power of Now, that is written by an author called as Ekchart Tolle. He was one of the most famous author when it came to writing books about spirituality, simplifying life, how to awaken souls, how to awaken spiritual minds. He has done a great work in that aspect. वैसे तो ये वाली बुक हमें काफ़ी सारे lessons सिखाती है. Let me know in case you want me to make a part 2 of this video which may talk about the other lessons which this book has described. So the first lesson is you are not your mind. Second one is the present is all what we have. And the third one is acceptance of whatever it is, so that you do not really conflict your mind, your heart, your soul. Just accept it as smoothly as you can. Now let's talk about our first lesson, which is you are not your mind, which means that you are not your mind, you are not your thoughts, you are much beyond that. इस वक्त we are all in autopilot mode. हमारा माइंड हमारे से बातें करता रहता है, चैटिंग करता रहता है. माइंड गेट्स अ लॉट ऑफ प्लेजर टू बी इन द पास्ट, लॉट ऑफ प्लेजर टू बी इन द फ्यूचर, बट इट विल नॉट अलाउ यू टू स्टे इन द प्रेजेंट, एंड दैट्स हाउ इट वर्क्स. इट गेट्स अ लॉट ऑफ प्लेजर. तो आप अपने आप से चैटिंग करते रहते हैं, यू कीप ऑन स्टोरी टेलिंग योर सेल्फ. कितने सारे स्पेकुलेशंस हम बनाते रहते हैं, कितनी सारी फीलिंग्स हमारे मन में आती रहती है. पास्ट में रहना तो माइंड को बहुत पसंद है, विच इज़ वाई major part of the human life is spent in the past, and we have all been overtaken by this force wherein we are not able to get ourselves to live in the present moment. And the tricky part is that we are not even realizing it. This is not something which is in our control, although you can get this in control
it won't be an easy journey, but at this moment, it's not in our control and we are not able to realize it. So if you read the book, Ekchart asks the reader, is there any way that you can be free of your mind? Is there any switch off button? If not, then you will always be associated with it. In this case, it's not that you are using your mind, it's your mind which is using you. आप अपने जब दिमाग को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, आप उसको एक स्टेबल पोजीशन पे नहीं रख पा रहे हैं, आप उसको प्रेजेंट मोमेंट में नहीं रख पा रहे हैं, कभी वो पास्ट में भाग रहा है, कभी वो फ्यूचर में भाग रहा है, हो सकता है प्रेजेंट में भी आता हो, लेकिन बहुत सारे थॉट्स आते हों, तो आप अपने माइंड को नहीं यूज कर रहे हैं, आपका माइंड आपको कंट्रोल कर रहा है. So just like, you know, it's really important for us to control our minds, and that is what the entire book talks about. Stop getting identified with your mind. We all are getting identified with our mind. It's us, it's our thoughts, it's our control which is supposed to become our identity, and not something which our mind is making us do. Now, to achieve this or to practice this, what would you need to do? You need to stop, sit back, relax, and take a step back. जैसे ही आपको कोई थॉट आए, कॉन्शियसली आपको ये देखना है कि वो पास्ट का थॉट है, कि प्रेजेंट का थॉट है, कि फ्यूचर का थॉट है. देन एक स्टेप पीछे लीजिए और उसके बारे में सोचिए कि वो आपको क्यों आ रहा है. अगर पास्ट का है तो उससे लेसन सीखिए और आगे बढ़ जाइए. फ्यूचर का है तो टेल योर सेल्फ दैट दिस इज नॉट इन योर कंट्रोल, और प्रेजेंट का है तो उस पर काम करिए. बट थिंक अबाउट इट, गेट योर माइंड इन दैट कॉन्शियस स्टेट जिसमें आपके पास उसका कंट्रोल हो, एंड दैट इज वॉट इज कॉल्ड एज सेल्फ इंक्वायरी, सेल्फ अवेयरनेस, self journey, self introspection, and that is what is called as awakening of mind, which will give you a power to live and stay in the present moment. This is how we can also work on something called as mindfulness. Mindfulness is nothing but about staying in the present moment, working on it, to ensure that whatever will be happening for our own good. We need to build that self-confidence around us and give us an assurance of working and staying in the present moment. So when you start observing your thoughts, you are no more trapped. You can always cope up with the present situation. That is always in your hands. The problem actually comes up with what ifs, could haves, should haves, the questions like these. That creates a lot of issues. So let's not get into that aspect of life, because that will anyways not going to help. Just sit for a moment and ask yourself, what is it that's something which is missing in this moment? Really contemplate that. मतलब बहुत बार अपने आप से पूछो, गो डीप इनटू इट, आस्क, पूछो अपने आप से ऐसा क्या है जो इस मोमेंट में मिसिंग है, एंड ट्रस्ट मी, आपको आंसर मिलेगा. देयर इज नथिंग विच इज मिसिंग. आपकी सारी पेन, सारी मिजरी, सारी सफरिंग्स अराइज ही इसी से होती हैं, बिकॉज हम लोग या तो पास्ट के बारे में बहुत सोचते रहते हैं या फ्यूचर के बारे में बहुत प्लान करते रहते हैं. सारी डिजायर, सारी कंप्लेन, सारे रिग्रेट्स. आप देखिए, अगर मैं पास्ट के बारे में बात करूं, मुझे भी बहुत सारी चीज़ों का रिग्रेट हो सकता है, काश मैंने उस टाइम पे ऐसा कर लिया होता. तो ये सारे नेगेटिव थॉट्स और जो नेगेटिव पैटर्न्स क्रिएट होते हैं इज ओनली बिकॉज ऑफ द पास्ट एंड द फ्यूचर. दोनों ही हमारे कंट्रोल में नहीं है. तो इसलिए वी हैव टू टेल आवरसेल्व्स कॉन्शियसली, अपने आप को समझाइए, अपने आप को बताइए, अपने थॉट्स पे ध्यान रखिए, बार बार अपने माइंड को इस तरफ लेकर आइए, एंड टेल योरसेल्फ दैट प्रेजेंट इज ऑल आई हैव. नाउ लेट्स मूव टू द सेकेंड लेसन ऑफ दिस बुक, विच इज all you have is the present, so live in this moment only. So let's be honest here, हम accept करते हैं कि future की planning करना is important. We really need to make sure that we have some goals, some visions, some aspirations as well. But उससे इतना भी हावी नहीं हो जाना है कि जो आपने प्रेजेंट में करना है आप वो कर ही नहीं पा रहे हैं. थिंकिंग अबाउट कि कल क्या होगा, वो क्या होगा, उसको कैसे संभालेंगे, अच्छा ये हो गया तो क्या होगा, इसमें तो किसी का कंट्रोल है ही नहीं. सो द गोल इज टू स्टे इन द प्रेजेंट मोमेंट. हम जितना अपने बारे में सोचेंगे कि फ्यूचर में क्या होगा, लुक,
Either it will be repetitive thinking or it will always be a negative thinking. So we have to avoid going in the future as much as we can. I tried doing it. You might be thinking that whatever I'm talking may not make sense, but just sit for 10 minutes and see what kind of future thoughts is coming in your mind. Either you will think that this may not work, that may not work. It will all be negative set of thinking, negative patterns, or it will be a repetitive thinking. If you don't accept it, it probably could be your ego which is coming in, but that's not how it works. That is exactly what our mind has been struggling through. A lot of people across the globe has this issue of staying in the present. You know what Tolle tells us in this book? That whatever you are doing in this moment, in the present moment, is something which is real. You may have some future goals and aspirations and visions and some very high aspirations and demands from yourself, but that is actually not practical and that's not real. The only thing which you do in the present moment is real. So keeping your visions and goals, keeping your aspirations is fine. That is okay. You should always have them, but don't get so overwhelmed by it that you stop working in the present. It shouldn't take so much of your time that the most important time, which is now, goes out of your hand and you're not able to do anything about it. Now, coming on the last part, which is accepting whatever it is. So it's very very important for us to accept, उस चीज़ को स्वीकार कर लीजिए जो इस मोमेंट पे है. Because अगर आप resistance show करेंगे, the more you'll resist from that situation, it will only bring in troubles, sufferings, pains, anxiety, stress, tensions, uninvited troubles it will come up with, जो हमें नहीं चाहिए. इस सिचुएशन को एक्सेप्ट करके उस पर काम करेंगे, उसको वैसे ही एक्सेप्ट करेंगे जैसे वो आई है. यू नो, आई थिंक एंड व्हेन आई एक्चुअली सैट विद माई सेल्फ and while introspecting, while thinking deeply, I realized that resistance कब आती है? When we know that what it is supposed to be or what it could be. It's actually the difference between the reality and our expectations from ourselves. That is when the resistance comes. Sometimes we become very very rigid and start resisting of whatever the situation is right now just because we were expecting something else completely. It won't happen that ways. जो आपने expect किया अगर वैसा होना ही होता तो वो अभी हो जाता. It has not happened is either because it is not supposed to happen or the situation is not right or the time is not right. It's never you who is wrong. It's always the situation which could be wrong or the time which is not in your favor. But in either of the situations, you cannot do anything about it. All you can do is just accept the situation, work on it, change it, or either come out of it. Don't resist. The more you will resist, it will only create challenges and barriers in your present, in your now. Accept the moment as if you have chosen it. जब आप ये स्टार्ट कर लेंगे ना कि जो आपकी लाइफ में अभी हो रहा है वो आपने ही चूज किया है, तो आप देखिएगा आप अपने आप उस मोमेंट पे काम करना शुरू कर देंगे. यू विल स्टार्ट मेकिंग इट बेटर. यू विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द बेटरमेंट ऑफ दैट सिचुएशन विदाउट गोइंग इन द पास्ट और विदाउट इंट्रोस्पेक्टिंग और एंटिसिपेटिंग व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर. You have to work in the present. You have to accept it, come out of it, work on it, or just achieve it. Ekchart Tolle says that this philosophy is actually called as surrendering to now. Surrendering is not a weakness, let me tell you. Surrendering also doesn't mean कि आपके पास कोई बहुत ही unfavorable situation है और आपने वहाँ पे surrender कर दिया. No, react, but that should not be a reactive surrender, or that should not be a reactive or a impulsive reaction to it. That should be a situation which you think and consider. First of all, accept that situation and then react to it. Change it, work on it, or come out of it. Just act only if it's required. Otherwise, just surrender to the now and work on it. Accept it very gracefully and smoothly. The more you will do so, things will start to improvise, things will start to become better. Then another thing which you can probably do is that
एक्नॉलेज योर रेसिस्टेंस कि आप क्यों उस सिचुएशन से भाग रहे हैं. वाई आर यू रेजिस्टिंग दैट सिचुएशन, क्यों आपको वो पसंद नहीं आ रही है. जब आप उसको एक्नॉलेज करना शुरू करेंगे तो आप उस पर काम करना शुरू करेंगे. जब आप उस पर काम करना शुरू करेंगे तो यू विल बी एबल टू मेक दैट बेटर. और जब वो बेटर होना शुरू हो जाएगी तो आप उसको एक्नॉलेज करके अपने कंट्रोल में करके उसको काम करके आप उसको कॉन्कर कर लेंगे. सो स्टार्ट एक्नॉलेजिंग योर रेजिस्टेंस, स्टार्ट नोइंग व्हाई आर यू रेजिस्टिंग from that situation, what is that what you wanted out of that situation, or what you were expecting out of that situation. जब आप वो सब कुछ करना शुरू करेंगे तो आपको या तो ये आंसर मिल जाएगा कि वो हो नहीं सकता, या फिर इट्स नॉट द करेक्ट टाइम, तो आप उसको वहीं पे खत्म कर देंगे, और यू विल कम आउट ऑफ इट, और यू विल स्टार्ट वर्किंग ऑन इट. It's important for us to take the charge of our lives, take the charge of your situations. You know, I think लाइफ इज जस्ट लाइक अ मिरर. कभी कभी क्या होता है ना, मिरर में हम कुछ देखते हैं तो कुछ खराब दिखता है, तो हम मिरर तो नहीं तोड़ सकते या उस चीज़ को तो नहीं तोड़ सकते, बिकॉज वी विल हार्म आवर सेल्व्स. एग्जैक्टली इज द लाइफ. The day you will start transforming yourselves, the world will transform. So before I leave, just concluding the 3 lessons which we learned today. The very first one is that we are not our thoughts, not our mind. We are much, much beyond than that. Second one, that it's just the present moment we have. So stay grounded, live in the present, work on it, and make it beautiful. And the third one is surrender to the now. Accept the situation, work on it, change it, or come out of it. That is how it will make your life beautiful. Things will start to simplify themselves, and you will be able to introspect what's happening in your life and change it accordingly. So if you like my video, please don't forget to like, share, and subscribe with all your friends. Let people know about how this beautiful book can change their lives. Let me please know if you want me to do a part 2 of this video to describe and highlight some other lessons which we learn from this beautiful book. I will be more than happy to do so. Until then, sending you all virtual hugs, love, and blessings. Stay positive and stay happy.